a game या कुछ भी ऐसी चीज़ और make a game, तो गेमिंग सिस्टम्स में हम लोग रिक्वायरमेंट करते हैं how you gonna build your own game a little bit, और या आपकी जो बाकी सारी चीज़ें होती हैं आप उसको कैसे कैसे लेके चल रहे होते हैं। अब एक डेमोस्ट्रेशन ये है कि जो डिफरेंट गेम्स होती हैं जैसे फ्लैपी बोर्ड हो गया या इस तरह की जितनी भी गेम्स हैं, पाइथन is one of the secure platform and one of the hybrid platform through which you can convert your Android game into iOS, into Android, into any even Ionic. So these are the different types of games through which you can design, develop anything you want to make it through. So game या उसके आज हम सिर्फ एक demonstration देखेंगे how you gonna make your own background in the Python. इसमें फिर different वेबसाइट्स आती हैं, फिर वेबसाइट की कोडिंग वगैरह आती है, वेबसाइट की कोड से रिलेटेड सॉफ्टवेयर इट्स गोइंग टू बी लाइक पाइथन। मैं आपको वो चीज़ें भी बताऊंगा हाउ यू गोना मेक अ डाउनलोड्स। तो पहले मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ आपको कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं फॉर द डेवलपमेंट पार्ट। सो पहले आपको एक चीज़ रिक्वायर्ड है दैट इज पाइथन। पाइथन के डिफरेंट वर्जन्स होंगे दैट यू नीड टू डाउनलोड। सो पाइथन में आपको पहले चाहिए 2.7। सो यू नीड टू डाउनलोड 2.7 in through which you can have the things you want to make on online system or online games and the development of the games. So first you need Python, and then you're gonna need to download the PyCharm. So PyCharm is one of the platform, one of the interpreter you can say this go up download karne ke baad you can make games in different terminologies as well. So Python and PyCharm. First, you need to download the Python, and the Python version you will be needed like 2.7.18. So 2.7.18 you will be needed, and if you have यानी कि अगर आप लोगों के पास Windows के ऑपरेटिंग सिस्टम डेफिनेटली तो आप लोग डाउनलोड करेंगे Microsoft के लिए, Windows के लिए MSI इंस्टॉलर। सो MSI इंस्टॉलर जो होते हैं वो आपको हेल्प करेंगे to make things work on your systems. अब MSI इंस्टॉलर्स जो काम कर रहे होते हैं, MSI जो इंस्टॉलर होते हैं वो डायरेक्ट आपके सिस्टम में ही जाके हिट करते हैं एंड through your system, through your working systems, they can have you can have actually access of the things. अब उनको हम करते कैसे काम हैं वो एक मैं आपको डेमोस्ट्रेशन दिखाता हूँ ताकि आपको ये आइडिया हो जाए how these things work in any kind of in this language especially. तो हम इन पे काम कैसे करते हैं। सो MSI इंस्टॉलर होगा, दूसरा PyCharm से आप डाउनलोड करेंगे द कम्युनिटी वर्जन। सो you can have both software online. एंड अगर किसी के पास ये सिस्टम ऑफलाइन नहीं चलते, ऑफलाइन डेफिनेटली सिस्टम रिक्वायरमेंट्स होती है, जैसे भी आप बात सुन रहे थे कि सिस्टम रिक्वायरमेंट मैटर करती हैं समटाइम्स, यस इट मैटर्स, तो हम उसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो रिपलिट होता है वहाँ से उसको कनेक्ट करवा के उस पर सेम कोड कर सकते हैं। सो वी कैन हैव द सेम थिंग्स ऑन ऑनलाइन एज वेल। So you don't even need the system requirement unless you need to do development on offline systems. So Python में game development के अगर मैं सिर्फ एक ये simple ये game चलाता हूँ जो I made over a month ago for a company for online, and ये game इस time पे Android में भी add है, Android के Play Store में भी चीज़ें add हुई हुई हैं। So if I'm going to start this game, it's a little bit, अच्छा इसकी भी processing complete हो रही है। So till the processing is going to be completed, I'm going to show you how the Python is one of the greatest language right now in this era. Python या इस तरह की जितनी भी हमारे पास लैंग्वेजेस आ रही होती हैं, Python एक्चुअली उसमें इंक्लूड कैसे की गई है। तो Python के जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज होती हैं, Python के मॉड्यूल्स होते हैं, इसमें एल्गोरिदम्स वगैरह जो होते हैं, that matters, that makes you to think that what you want to do. So this is one of the simplest program you're going to do in Python. आपको इसमें जो लोग लैंग्वेजेस से फेमिलियर हैं कि कंप्यूटर के ऊपर जिस तरह कोड किया जाता है या कोडिंग उस पर की जाती है, सो यू नीड अ लॉट ऑफ हेडर फाइल्स टू मेक अ कोड ओवर द इंटरनेट और मेक अ कोड ओवर द प्रोग्रामिंग। सो यहाँ पे यू डोंट इवन नीड टू डू सच थिंग्स, यू डोंट इवन नीड टू डू such header files, you don't even need to make anything change in the header file. So you have a simpler method to code a lot of things. So this is one of the game जिसको मैं स्टार्ट करूंगा। सो
ये एक मेरे पास कस्टमाइज गेम होगी. सो दिस इज वन ऑफ माय कस्टमाइज गेम जिसको आप अपने स्टाइल में जिस तरह मर्जी खेल सकते हो. एक ये गेम है. अब इस गेम के ऊपर भी एक मार्केट है. देन आई this is one of the project of my student who was working with this project. So उससे ये project complete नहीं हुआ, लेकिन उसको बाद में फिर कंप्लीट करके दिया था. तो इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ये मार्केट में आप सेल कर सकते हो. यू कैन सेल दीज काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स इन द मार्केट. सो दिस इज वन ऑफ द रेंज ऑफ द गेम कि अगर आपने कोई जॉब वगैरह या कुछ भी गेम डेवलपमेंट वाली साइट पे आना है, सो यू कैन शो दैट यू कैन बिल्ड अ सिंपल गेम टू गेन द मार्केट. सो यू कैन इंक्रीज दीज काइंड ऑफ गेम्स फॉर द एंड्रॉयड एंड बाकी सारी चीज़ों में भी आप इनको इंक्रीज करवा सकते हैं. फिर आर्काइड गेम्स हैं, फिर देयर आर लॉट ऑफ गेम्स इंक्लूडिंग द फ्लैपी बर्ड. Yes, you can even have the Flappy Bird with the help of these Python programming. Flappy Bird जैसी गेम को Python में डिजाइन करना at the same interface level. So this could be an interesting thing. That's हाँ, गेम से फिर आपको फायदा क्या होता है अगर आप गेम डेवलपमेंट या कुछ भी ऐसी चीजें करते हैं. को फायदा इस चीज का होता है, you can gain the market and you can gain the money from the Play Store as well. So Play Store से भी आप इस चीज को अर्न कर सकते हैं. So this is what is going to be happen. हम एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें यू आर गोइंग टू हैव अ बैकग्राउंड. आप उस बैकग्राउंड में क्या होगा कि आप पाइथन को यूज करके आप अपने उसके जो कोड वगैरह होते हैं या इस तरह की भी चीज़ें होती हैं आप उनको यूज कर सकते हैं फॉर द मेक चेंजेस. सो हम इसका सिर्फ एक डेमोस्ट्रेशन रखेंगे दैट इज यू आर गोइंग टू मेक, जिसमें हम बैकग्राउंड इसका लिखेंगे हाउ यू गोना मेक अ बैकग्राउंड वर्क प्रॉपरली. कलर्स कैसे सेलेक्ट करते हैं, कलर्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, उन कलर्स के थ्रू आप की फिर क्या क्या प्रोग्राम कर सकते हैं, उन कलर्स की प्रोग्रामिंग से फिर हम कहाँ कहाँ पे जा सकते हैं. सो दिस इज़ वन ऑफ द रेंज ऑफ प्रोडक्ट. सो यहाँ पे हमने जो कंपाइलर सेलेक्ट किया दैट इज 3.8. सो आई एम नॉट गोइंग टू सेलेक्ट द 3.8. सो आई एम गोइंग टू चूज 2.7 एज आई टोल्ड यू गाइज दैट यू नीड a 2.7 compiler so you can have this game, this platform. So with the help of this platform, what we are going to do, we are going to make a basic template for the Python. How we gonna make it? उसका सिंपल सा कोड होता है, इतना सिंपल सा कोड जैसे कि आप बहुत इजीली उसको याद भी कर सकते हो. सो डोंट इवन, इट्स नॉट इवन दैट हार्ड दैट कि आपको बहुत सी चीज़ों को याद रखना पड़े या बहुत सा कुछ ऐसा करना पड़े जिसमें आप ये सोचना पड़े कि हम इसको कोड कैसे करेंगे या इसको हम लेके कैसे चलेंगे. सो ये मेरा एक बैकग्राउंड है. सो यहाँ पे मैं एक फाइल क्रिएट करूंगा. सो आई एम गोइंग टू क्रिएट अ फाइल, बट बिफोर दैट I'm going to make sure that this one we're going to completely work properly, the indexing part, so when this is completely updated, so we can do things properly accordingly. So one of the range of the things that you do need is कि जब भी आपका कंपाइलर कोई भी हो, चाहे वो आप पाइथन के लिए यूज करें चाहे वो आप किसी भी प्रोग्रामिंग के लिए यूज करें, यू नीड टू वेट until this processing will be completed. क्योंकि ये प्रोसेस एक्चुअली हिट हो रहा होता है आपके अपने प्रोग्राम फाइल्स, आपके अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, आपकी अपनी बाकी थिंग्स के साथ. सो दिस इज वन ऑफ द रेंज ऑफ द प्रोडक्शन libraries that you're gonna need for the working as well. So इसको completely work को complete करते हैं और it will gonna take a little bit time more. जब तक ये complete हो रही होती है, I'm going to make a proper file through which we can code in it. So this is one of my file. अब मैं इसका नाम रखूंगा background. So it's going to be like background. अब मुझे Python की ही फाइल ये क्रिएट करनी है. So through which I'm going to have the things. अच्छा, ये प्रोसेसिंग है क्या? This is one of the range of the processing that you can complete working जिस पे आप कर सकते हो. और इसकी प्रोसेसिंग की वर्क से you can even do things what you even need to make work on the compiler. अब मुझे यहाँ पे क्या क्या चीज़ें चाहिए. So one thing I have to make sure that जो मुझे चीज़ required होगी पहले वो ये होगी कि मुझे एक चीज़ इंस्टॉल करनी है. So with the help of pip I'm going to install pip install. So pip जिससे हमने कोई चीज़ इंस्टॉल करनी हो इसमें, so we need it. So मैं यहाँ पे करूँगा py game. So ये मुझे इसकी फाइल्स वगैरह को डाउनलोड करके दे देगा. So this is one of my फाइल जो मुझे जिसमें से चीज़ चाहिए होगी.
सो ये मेरी वो फाइल्स को डाउनलोड करेगा जो मुझे इसमें से चीजें रिक्वायर्ड होंगी. ओके, ये मेरा इसमें इंस्टॉल हो गया. अब मुझे इसमें से क्या चीज़ चाहिए, अब मेरा ये यहाँ पे इंस्टॉल हो गया. सो अब मैं यहाँ पे इसको इंक्लूड करवाऊंगा. बिफोर दैट इसकी इंक्लूडिंग में मुझे चाहिए होगा. सो आई एम गोइंग टू इंपोर्ट py game, क्योंकि ये एक डेमोन्स्ट्रेशन फॉर द बैकग्राउंड कलर एंड बैकग्राउंड कलर्स को हम गेम्स के अंदर या किसी भी एंड्रॉयड, डेफिनेटली कोई एप्लीकेशन होगी, एंड्रॉयड एप्लीकेशन होती है, कोई भी एप्लीकेशन होती है. सो वी नीड टू मेक श्योर कि हम उसमें अपने कलर कोडेशन या कलर्स का बहुत ध्यान रखते हैं. सो that make our game and profile is more attractive towards the audience. So one of the has been py range. So अब मैं यहाँ पे decide करूँगा मेरा background, so it gonna be like in white color. So white, and that आप कुछ भी color रख सकते हैं. नाम मेरा white इस वजह से क्योंकि मैं यहाँ पे जो combination दूंगा that will belong to my white color. So these are my white color, one of the range of white color. तो मैं इसको बल्कि कॉमा के साथ इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ so that could be more effective. मैंने अपना कलर बैकग्राउंड का डिसाइड कर लिया. नाउ आई वांट कि मैं अपनी गेम के अंदर इन कलर्स को सेट करूं. सो इट्स गोइंग टू बी लाइक इनिट पे मैंने अपना एक फंक्शन कॉल कर दिया. फंक्शन कॉल से मुझे चीजें मिलना स्टार्ट होंगी. सो py game की फंक्शनल कॉल से मुझे चीजें मिली. नाउ आई एम गोइंग टू सेट द साइज ऑफ माय स्क्रीन. सो इट्स गोइंग टू बी लाइक 700, 700. So this could be my size of the screen and the screen display जो मुझे required होगा. So it's going to be like with the help of py game dot display. मुझे इस display से एक set mode चाहिए. Set mode अब यहाँ पे मैं दे दूँगा size of my screen. So this could be like the size of my screen जिससे मैं easily get कर लूँगा. So py game dot display. अब मुझे उसके डिस्प्ले का कोई नाम सेट करवाना है. सो सेट कैप्शन. सो द नाम इसमें आ जाएगा. इट कुड बी लाइक Python class. So it's a demo class for my Python. So and then मैं यहाँ पे इसके loop को terminate कर दूंगा. So done is equals to false. My loop will be terminated. And then मैं clock start करूँगा. So clock actually मेरा matter करेगा. So where I have to make sure that my program will work until, यानी कि स्क्रीन में जो डिस्प्ले रहेगी वो 60 seconds तक रहेगी. कैसे मैं loop लगा दूंगा. So this is one of my loop not done until my loop is not done for event. So whatever I gonna create an event in py game dot event dot get, whatever I event I'm going to be get, वो मुझे मिलेगा अगर मेरा इवेंट चलता है किसी भी कैटेगरी पे. जैसे मैंने कहा कि कोई भी इवेंट होगा मैं इसको कंपेयर करूंगा until unless मेरी गेम जो है वो क्विट ना कर दी जाए. Until unless my game will be quitted. So done तो मैं कर दूंगा. अगर मेरी गेम क्विट होगी तो मैं ठीक है बाहर आ गया. अदरवाइज आई विल गोना स्टे इनटू माय गेम. अब मेरी जो स्क्रीन होगी दैट स्क्रीन गोना फिल विद व्हाट, फिल विद वाइट कलर. वाइट. सो मेरी स्क्रीन वाइट कलर में फिल हो गई. अब मैं यहाँ पे इसको करूंगा py game dot flip. डिस्प्ले को कर दूंगा फ्लिप. फ्लिप का मतलब ये नहीं है कि आप रिवर्ट कर रहे हो. फ्लिप का मतलब है कि आप अपने स्क्रीन के डिस्प्ले पे कोई ना कोई चीज शो करवाने जा रहे हो दैट यू नीड टू शो ऑन योर स्क्रीन. Okay, sure, why not? And that screen will be displayed in, and वो स्क्रीन कितने देर के लिए फ्लिप होनी चाहिए. So it could be like the clock tick for the second 60 seconds. Clock dot tick. It's gonna move here for the 60 second, and I'm going to end the part of the game. So game dot quit. This is it. कि हम इसका डिस्प्ले जो है वो बैकग्राउंड का कैसे सेट करते हैं. So I'm going to make it run the background, and this will make the background in white color, and this will create a white color as well. So background में मेरा white color सिर्फ डिस्प्ले होगा स्क्रीन साइज 700 into 700 में सिर्फ 60 seconds के लिए.
So 60 सेकंड के लिए it will generate a huge working time, क्योंकि जब हम किसी भी इस तरह के प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे होते हैं तो इन प्लेटफॉर्म्स पे हम वर्किंग करते कराते हम आगे से आगे चलते रहते हैं. And this is my 7x700 display, and this is my name of my class. इसका मैं display का color black भी रखना चाहूँ, so we can have it in a black color as well. So इस display पे आप बाद में games भी upload कर सकते हैं, games update कर सकते हैं. You can have the access of everything into this one. So this is all about the workshop. कि हम ये तो डेमो था एक कि हम इसमें क्या चीज़ कैसे कर सकते हैं कैसे नहीं कर सकते, क्योंकि we are going to have arranged proper classes for this things. So this is it for today's session, through which you can have the access of this is one of the demo कि हम Python की game development में क्या चीज़ कैसे कर सकते हैं. So you'll get the link from the management as well, and you can also have the link from the Facebook. So this is it for today's session, through which you can have the development of the simple game कि आप उसके game का background इसमें कैसे set कर सकते हैं.